Good evening, everyone. ठीक है, this is a special lecture series of the Ekagraa IAS Academy. We all know कि from the 22nd of August UPSC मेंस सिविल सर्विसेज की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, राइट? एंड इस एग्जाम के अंदर जब 23rd अगस्त को वी हैव अ जीएस पेपर 2 एंड आज के इस लेक्चर में हम उसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स डिस्कस करने वाले। थीम्स कौन से? बेसिकली वो थीम्स हैं जो एकाग्र एकेडमी के अंदर फुल लेंथ टेस्ट ऑर्गेनाइज हुए थे, जिनको हमारे मेंस अपीयरिंग कैंडिडेट्स ने अपीयर किया था, अटेम्प्ट किया था। जस्ट हम उन क्वेश्चंस को आज यहाँ पे देखने वाले हैं, बिकॉज इन क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटीज हैं इट इज क्वाइट हाई। तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स डिस्कस दोस थीम्स वन बाय वन। नाउ अगर आप यहाँ पे पेपर को देखें क्लियरली, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इट इज ऑन अ थीम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, राइट? अब हम जानते हैं इंडिया में वी हैव अ जुडिशियल, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो इनके ही पावर्स के सेपरेशन पे बेस्ड जो थीम है वी मे एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? नंबर वन। नंबर टू, जो एक प्रोमिनेंट थीम है रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जिसे भी हम प्रोमिनेंटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम देखें करंट सिचुएशंस को इन अ कंट्री, तो इन कॉन्टेक्स्ट में इन सवालों की प्रायोरिटी क्वाइट हाई है। रिमेंबर, मेंस के रिगार्डिंग हमेशा एक चीज बहुत प्रोमिनेंट ये होती है, एग्जाम से जस्ट 6 months बिफोर जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स न्यूज में होते हैं उन इवेंट्स के थीम्स पे क्वेश्चंस के बनने के चांसेस आर क्वाइट हाई, एंड बेस्ड ऑन दोस थीम्स ओनली वी कंडक्टेड वेरियस टेस्ट and this GS paper 2 is also based on the same, right? Let's see ahead the question number 3. Now in the question number 3 we can clearly see the theme of right to information act, which is actually important in every year's GS2 examination. तो इसे हम बोल सकते हैं it's kind of evergreen topic. Apart from it, जब भी हम बात करते हैं right now the controversy regarding to the NEP का implementation, right? So while in implementation there is a various conflict between center and state, so based on it the question of cooperative federalism or the theme of cooperative federalism can be important in this year's examination. अब इसके आगे हम बात करें तो और कौन कौन से थीम्स की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से इंडिया इज अचीविंग अ माइलस्टोन, ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और इंक्रीजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन इन इंडिया, राइट? तो इसके साथ साथ जो एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन, जो एक इश्यू अराइज हो रहा है, इट इज रिगार्डिंग टू द डिजिटल गवर्नेंस, कि हाउ दीज थिंग्स शुड बी कंट्रोल्ड or should be regulated. So even this thing is also in news and we can expect a question based on this. Apart from it, there is a question regarding to the gender justice, right? So see, one again this theme is also an evergreen theme. The women's concern or crime against women is something jahan se question we can expect in also in the GS paper 1, right? And these questions can be regarding number one, issues faced by women in the specific settings, कि what kind of issues they face in India's cultural landscape, in India's political landscape. So these kind of things can be there in a question based on this particular theme. Apart from it, if we talk about the issue of regional disparities in human development in India, as in the end of this year we have elections in Bihar, right? And definitely whenever a question comes regarding to the India's eastern states, even in this year's budget the grants has been given to the Bihar on very large scale. Why? Because somewhere Bihar facing the backwardness and it is a prominent issue of regional disparity, so we can expect this theme again in this year's examination. Apart from it, the major aspect is the regarding welfare scheme. Let's say one thing is always in news is the issue of freebies, right?
अप टू व्हाट लिमिट फ्रीबीज शुड बी ऑफर्ड, और ये फ्रीबीज कब तक चलने चाहिए, राइट? बिकॉज गवर्नमेंट हैव लॉट ऑफ स्कीम्स, गवर्नमेंट डू लॉट ऑफ स्पेंडिंग ओवर इट, बट कंसर्न कहां पे है? कंसर्न इज रिगार्डिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन. सो वी मे expect question or you can say a theme regarding to the implementation of welfare scheme. Apart from it, if we see in the context of international relations, see how dynamically India US, India China and India Russia relations are taking new shapes. उस context में again Indo Pacific जो आपका पोस्ट है, ठीक है, या कहीं तो इंडो पैसिफिक के रिगार्डिंग जो कुछ भी न्यूज है, एज दिस वाज इनिशिएटेड बाय यूएस, बट समवेयर नाउ यूएस इज टेकिंग सम काइंड ऑफ यू कैन से अ यू टर्न. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगेन रीथिंकिंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन हो सकता है रिगार्डिंग टू इंडियाज इंडो पैसिफिक पॉलिसी. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जो ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल लेवल पे इश्यूज आर ऑनगोइंग, चाहे वो ट्रेड के डायमेंशन में हो, चाहे वो वॉर के लेवल पे हो, तो डेफिनेटली यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इट इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस. तो वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द यूएन रिफॉर्म्स, रिगार्डिंग टू द implementation or you can say the implementation of WTO treaties and the role of WTO in ensuring just and fair trade across the world. So these are the prominent themes which we can expect in the examination, ठीक है. और अगर हम इनके अलावा जो इस पेपर के अंदर जो हमने लिया था एज अ फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, फॉर जीएस पेपर 2, अगर हम इनके लेंथी क्वेश्चंस की बात करें सेक्शन बी के अंदर, सो वन मोर यू कैन से कॉमन थीम जो काफी न्यूज में है, दैट इज गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स. दे आर ऑल्सो इन न्यूज, लेट्स से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इन स्टेट ऑफ केरला, ये चीजें काफी लाइमलाइट में थी, तो डेफिनेटली हम यहां से एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, राइट. सी इस बार जो एक कमिटी की रिपोर्ट आई, कमिटी बाय आर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिगार्डिंग टू द साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जिसमें यह बात की गई है कि इवन द इलेक्शंस ऑफ द लोकल बॉडीज विल बी कंडक्टेड, ठीक है, इन दैट साइमल्टेनियस वन. तो again that same thing came in news, and 73rd and 74th, one more evergreen area from where we can expect a question in this year's examination, right? Recent controversy we already know on the role of the Election Commission of India. So definitely how effective they are playing their role, right? or suggested reforms, इन पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम के अंदर पॉसिबली वी कैन सी. इवन इट कैन बी रिगार्डिंग टू द recent and ongoing controversy of SIR going in Bihar. Apart from it, if we talk about ki how Indian Constitution talks about legal equality and the social equality. See, equality is a prominent theme, okay, on which UPSC generally ask a question. And when we see various kind of indexes, चाहे वो HDI हो, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, या जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से दिस थीम अगेन बिकेम इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन इंडेक्सेस के अंदर जो रैंकिंग है इंडिया की स्पेसिफिकली इन दैट कॉन्टेक्स्ट. अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है, द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, राइट, एज पार्लियामेंट का जो वर्किंग है, इट शुड बी लाइक इट इज अ बॉडी, ठीक है, which is for the debates, discussion and then for making laws. और जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर स्पीड ऑफ लॉ मेकिंग इंक्रीज हुआ है, इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न, राइट, एंड बेस्ड ऑन दिस थीम वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन इन दिस ईयर. अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है, द रोल ऑफ थिंक टैंक. नाउ वी ऑल नो एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक जो इंडिया में है, इट इज नीति आयोग, right, and also we have pressure groups and other non-state actors. So based on their approach ki how they contribute in India's policy making, on that theme also
we may have a question, we may expect a question in this year, right? और उसके अलावा if we talk about other things, definitely, ठीक है, the things which are prominently in news, number one, that is reservation policy. And as many times you must have seen subcategorization, the issue of subcategorization, ठीक है, in the OBC and also in the scheduled caste. So this theme of subcategorization can be in news, ठीक है, in the recent time. Apart from it, public health in India suffers from the triple challenge. Overall, you can see कि the core issue of the health, right, that is accessibility, affordability and quality, it can come in news in regards to the national health policy 2017 and its implementation. तो ये वाली थीम भी इस साल इंपॉर्टेंट हो सकती है. Again, India's climate diplomacy, like the PM Modi playing a prominent role, whether in form of the mission life और जो हमारे earlier initiative रहे हैं, like International Solar Alliance. So on context में, ठीक है, you can see the questions in the examination, and ultimately a question can also be based on the reform in UNSC. Because after the Operation Sindoor, the global response, and especially by the UNSC, it was not that proactive. Okay? Also in case of the other conflicts, whether it was attack or a war between Israel and Palestine, war between Russia and Ukraine. So definitely we can expect a question regarding to the reform in the UPSC. So these are the prominent themes on which we can expect question in this year's mains examination. So those who are giving this examination, all the very best, and give your best in the examination without any kind of fear. Thank you.